everyone, welcome back to our channel. This is me Iman and Moza. And you are watching News, views and updates. और आज जिस वीडियो पर हम रिएक्ट करेंगे वो वीडियो मुझे तो बहुत डिफरेंट लगी है, मतलब उसका टाइटल बहुत डिफरेंट लगा है. दैट इज इंडिया द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. तो मेरे ख्याल में हम लोगों को पहले वीडियो देखनी चाहिए और उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे. तो without wasting any time, let's start and watch that video. A few years ago, I was preparing myself for my first visit to India. So the people who I know started to ask me what India has apart from slums, yoga and Bollywood. Many of my well-wishers warned me about my safety in India, as they had heard the news of rapes from media. But they got completely shocked when I explained to them that actually our own Western countries have a lot more rapes than India, and the correct way to understand the statistics of a crime is not by numbers, but by proportions. Due to a massive population that India has, the numbers of a crime can easily go very high, but in proportions, India is so much better than us. Only when I explained this to my well-wishers, they realized how our media had been manipulating us, and it still continues to do so. Whenever I am back in Poland or in any part of Europe, I am asked if India is interesting to travel at all. So many people around the world have a very low awareness about this country, and today I am going to tell my friends and the world citizens about India. Before I start to tell you what this country has, let me start it with a small example that one can so easily see on the streets of India. We all know how an average poor man in Europe finds it nearly impossible to take his family out to the cinemas, entertainment parks, or for a dinner, because they all cost a lot of money. In Europe, for a person on a very low budget, buying new clothes or traveling out of the city with their family is probably a dream that unfortunately never comes true. The truth is that for most of the people in Europe who have less money, eating out is mostly restricted to kebabs or just buying a bread from a supermarket, because the lifestyle in Europe is such that there are just not too many options for a poor. But in India, there are cinemas, entertainment parks, restaurants and markets that are not just for the elite and the middle class, but also for those who are on a very low budget. In India, a poor can also buy new clothes or gifts for his loved ones, because there are so many affordable markets that are well within their reach. In India, a poor person who has a very low budget can also afford to dine out with family to enjoy those joyful family moments. And trust me, in such affordable markets, they are also selling exotic Chinese food or even an Italian pasta. How many poors in Europe can afford exotic multi-cuisine meals or a travel within their country in trains or buses? In India, there are just so many types of options and lifestyles which come in all kinds of budgets. A full meal starts from 10 rupees and can go as high as anywhere else in the world. There are multiple price categories in buses, trains, its cinemas, and in everything else to suit everybody's budget. And just to let you know, all these businesses make profits too. The super low cost and affordable markets of India are also visited by the middle class people, and many times even the richest, because they got a good bargain or they just love the atmosphere of such places that are so full of life and energy. And this is how India nourishes and protects all her citizens, by giving them so many different opportunities in different budgets, and these so many parallel lifestyles
that are mingled together is a sight to see, which continues to mesmerize me every day. I like to travel in India because it has a plenty to offer. Whether you are on a shoestring budget, a middle-class traveler, or someone who wants to be pampered with the highest luxury. Whether you are a tourist, a professional, a spirituality seeker, or someone who wants to be benefited by India's medical tourism, this country welcomes everyone without any prejudice, from its salt flats to its rainforest, from its pristine islands to its volcanoes, from its cold desert of Ladakh to its great Thar desert of Rajasthan and Gujarat, from its rich jungle safaris to its mysterious ancient tribes who continue their story even today. India can literally overwhelm you. And the story goes on in the tea and coffee plantations of its northeast and its south, and also in its beaches of the 7,000-kilometer plus coastal line. Feel the intensity of the famous Chadar trek in the mighty Himalayas, or see how the life manifests in the freezing temperatures of Tawang, or simply admire its hundreds of waterfalls. तो वीडियो देखकर सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी है वो ये है कि इस वीडियो में टिपिकली पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन नहीं किया गया सबसे पहले। हाँ। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ऐसी वीडियो देखी जिसमें इंडिया और यूरोप का कंपैरिजन किया गया है। लेकिन ना जो कुछ वो इंडिया की बातें बता रही थी ना, वो सुन के मेरे चेहरे में स्माइल आ रही थी, क्योंकि सारी चीजें पाकिस्तान में भी इसी तरह हैं। सेम ये चीजें हैं पाकिस्तान में, लेकिन मुझे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा कि देखिए हम क्या यहाँ पर होता है कि आप इंडिया और पाकिस्तान कंपैरिजन करते रहते हैं, आप यूरोप के साथ कंपैरिजन कर रहे हो और आप बता रहे हो कि यूरोप के ड्रॉबैक्स क्या हैं और आपकी यहाँ पर प्लस पॉइंट्स क्या हैं, और बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसी वीडियोस बनाते हैं और बताते हैं। अदरवाइज हमने यही इमेजिन किया था कि यूरोप में सब कुछ बहुत बहुत अच्छा है और बहुत फैंटेसी लाइफ है वहाँ पर। वीडियो देख के मेरे ज़हन में बस पूरी वीडियो में एक ही चीज घूम रही थी कि ये सारी चीजें हम भी करते हैं। हाँ, लेकिन वीडियो की एक और बड़ी अच्छी चीज लगी है मुझे कि उन्होंने हर क्लास को टच किया। उन्होंने एलीट क्लास, मिडिल क्लास, फिर इसके बाद मतलब लोअर मिडिल क्लास, सब क्लास को उन्होंने टच किया। वीडियो में ना असल में जो एलेना गोस्वामी उन्होंने ये बताया हुआ है कि यूरोप में जो है हर बंदे को एक ही लेवल पे ट्रीट किया जा रहा है। वहाँ पे उनके पास इतनी सहूलतें नहीं है, इनकी फैसिलिटीज हैं। नहीं, ये चीजें फैसिलिटीज हैं, लेकिन उन लोगों की इतनी उनका बजट नहीं है, इनकम इतनी ज्यादा नहीं है। और दूसरा ये कि जो मीडिया मैनिपुलेट करता है आपको, ठीक है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई थिंक मीडिया की जो हमारी कंट्रीज को ना बहुत डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। मेरा हाल में इस तरह की चीजें इतनी है नहीं जिस तरह की आपको पोर्ट्रेट करके दिखाई जाती हैं। और वाकई में इस तरह होता है कि आप मार्केट में निकलते हैं तो डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं होटल्स की, हर रेस्टोरेंट की। आपका जो बजट है आप उसके हिसाब से खाएं पिए, बिल्कुल याशी करें, वापस आए। मतलब आप ढाबा पर भी बैठ सकते हो। मतलब मेरा हमें ये सारे एशिया में ये शायद अपॉर्चुनिटीज मिलती होंगी कि आप ढाबे पे बैठकर 10 रुपए का खाना भी खा सकते। आई डोंट नो कि वैसे लाहौर भी जो है वो फूड के लिहाज से बड़ा जी शौकीन लोग समझते हैं इसको, लेकिन मुझे नहीं पता कि 10 रुपए की प्लेट यहाँ पर खाने की मिलती है या नहीं। मेरा 25। हाँ नहीं, अगर आप कह दे तो दुकान वाला दे भी देता है, वो कुछ कहता नहीं है। हाँ, और मोस्टली वैसे ये भी होता है कि मेरे हाल में अभी मुझे पता कि लोगों ने कहने लगते हैं 10 रुपए के लेके खाए हुए। लेकिन फिर देखो कि उसमें वीडियो में ये भी बताया गया कि इटालियन फूड भी, मतलब इटालियन पास्ता भी आपको मिल जाता है, चाइनीज फूड भी मिल जाता है, और मेरे हाल में यही ऐसी डिफरेंट फूड्स हैं जो कि आपको बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। Because I'm very fond of pasta. I love to eat pasta. Or he doesn't like fried rice only in Chinese. तो मुझे तो वैसे ये पास्ता बहुत पसंद है खाने में।
और अगर लेकिन पाकिस्तान में वैसे ऐसा पास्ता मुझे नहीं लगता कहीं पर मिलता है, मतलब जो बाहर रोड साइड पे नहीं मिलता, वैसे रेस्टोरेंट के अंदर मिलता है। हाँ रेस्टोरेंट्स में तो मिलता है, लेकिन अगर वैसे ऐसे मिलना चाहिए है ना, वो मिलता है सैलेड में मिलता है, फ्रूट सैलेड में। नहीं फ्रूट सैलेड में मिलता है, लेकिन ऐसे भी मिलना चाहिए क्योंकि फिर मतलब यू नो चले कर लगाना इजी है। आप कैसे लगाते हैं, ट्रेंड शुरू करते हैं। नहीं आप करें, मैं नहीं थी घर में कर सकती, लाइक इट्स आई थिंक इट्स इजी फॉर एवरीवन टू गेट पास्ता और टू फूड। और वीडियो में एक और चीज दिखाई गई है कि इंडिया में हर किस्म का मौसम है, हर किस्म का मजहब है, हर किस्म का कल्चर है, एंड दे वेलकम एवरीवन हाँ। विदाउट एनी प्रेजुडिस। तो ये भी उन्होंने मतलब अपनी वीडियो में दिखाया हुआ है, और वो बहुत अच्छा एक मैसेज पूरी दुनिया को दे रही हैं। और ये भी मुझे, हाँ आप जैसे बात कर रहे हैं कि हर तरह का मौसम है, पहाड़ है, रेगिस्तान है, गर्म रेगिस्तान है, ठंडा रेगिस्तान है। आपको तो पाकिस्तान में भी गर्म और ठंडा दोनों रेगिस्तान है। अच्छा, और फिर उसके अलावा मुझे वो वाटरफॉल बहुत प्यारा लगा था, है ना, वो बहुत खूबसूरत था। तो खैर ये तो थी हमारी आज की वीडियो, होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह हमारी वीडियोस लाइक करते रहें, हमें ऐसे ही आपके लिए वीडियोस बनाते रहेंगे, और सजेस्ट करते रहें, कमेंट करते रहें, शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। एंड थैंक यू सो मच once again for supporting our channel and keep us in your prayers. Till then, bye.